ये मैं उन बहनों के लिए बोल रही हूँ जो खुलेआम देखते हैं कि उनके हस्बैंड चीट कर रहे हैं, और कई यानी ख़वातीन बेवकूफ़ाना हरकत करते जैसे ही दे सी देयर हस्बैंड्स चीटिंग वो लोग डायरेक्ट कन्फ्रंट करने जाते। तो दिस इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक। डू नॉट कन्फ्रंट व्हेन यू आर अलोन, बिकॉज जो चीटर होता है इट्स अ चॉइस, इट्स नॉट बाय एनी मिस्टेक। he knows what he is doing and he is doing cheating by his own will। तो अब ऐसे आदमी को अगर आप जब तन्हा हैं आप उसको कन्फ्रंट करेंगे तो वर्स्ट सिनेरियो ये है कि ही विल अटैक यू। मे बी ही विल फूल यू इफ़ ही इज़ एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंसानियत है, वरना तो ही विल अब्यूज़ यू फिज़िकली। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड व्हेन यू सी any type of activities and all, just keep a proof of it। जैसे कोई emails है या photographs है आपके पास, कोई messages है, तो you try to collect the proof, and then when you're collecting all the proof, keep it safe and try to share it in your emails or with your trusted friends, so that if that cheater deletes, they do this, they delete the proof, so at least you will have 2-3 copies of it। And then you have to confront when there are your loved ones around, your friends, his relatives, his friends। This is for protection, and you have to be prepared and you have to have a backup plan, because once a cheater is caught, he may leave you, ही मे डिवोर्स यू। तो आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इसके लिए। यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान का एक अलग मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी। और बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। यही सिनेरियो है कि मे बी ही विल लीव यू, एंड इफ़ यू आर अलोन नेवर कन्फ्रंट दिस, प्लीज़ कीप इन माइंड। मेरे साथ ये हुआ व्हेन आई कन्फ्रंटेड हिम, ही पोर्ड हॉट कप ऑफ टी ऑन माई चेस्ट। दैट टाइम आई वॉज अ लैक्टेटिंग मदर। he didn't care at all। और इसके एक्टिविटीज़ मैं तकरीबन सालों से, लिटरली 10 years से देख रही थी। he would always make profiles in dating and marital sites। he would chat early in the morning। on weekends I had seen him chatting with someone on Skype, and someone would call a late night, then when I called them back at daytime, he would come to know कि I have called them। बट एक फ़िज़िकल चीटिंग ऐसा नहीं देखी हूँ मैं। हाँ, ऑन क्या बोलते, लैपटॉप और कंप्यूटर वेब कैम था। यही है चीटिंग, यही है व्हेन यू आर डिलीटिंग मैसेजेस, व्हेन यू आर डिलीटिंग हिस्ट्री। तो मेरे साथ तो ये हुआ, एंड आई वाज ऑल अलोन विथ माय यंग किड्स। आई वेंट रनिंग टू देम। I didn't say a word, not even a bad word। I was just crying and I kept telling, am I a cat or a dog जिसके ऊपर तुमने इतना यानी hot cup of tea फेंक दिया। I didn't say anything to him। I was literally in tears। और मैं अपने बच्चों के पास भागी थी। मासूम बच्चे उठ गए थे and they were shocked। इसकी आगे स्टोरी I will tell you later, but I want to tell कि मेरी एक दोस्त है, शी कॉट हर हस्बैंड ईमेल पे जो है उसने देखा कि वो एक गर्लफ्रेंड के पास सिर्फ एक दिन के लिए वो गया है, यानी फ्रॉम फॉरेन कंट्री ही वेंट, एंड देन ही स्पेंट अ डे विथ हर और वॉट एवर, एंड दे वर फोटोग्राफ्स। दैट इज़ द बेस्ट प्रूफ, that photographs were in his mailbox। So she being whatever, I don't want to reveal the profession, she saw his mailbox and the photographs। so what she did was, वो ईमेल जो है 2-3 जगह वो अपने ईमेल्स में भेज दी, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड के पास भी भेजी, एंड बिफोर ही कम्स फ्रॉम ऑफिस at 4 o'clock, she did a really smart thing। She called his relatives, she called his friends, she called her relatives, and she called her friends, and she said, there is something very important, please come at 4 o'clock or 5 o'clock। And then when everyone were there, she
No, no, they didn't come. He had come at 4 o'clock. They had come at 5, I think. So when she asked him, "What is this?" suddenly he deleted it. This is the thing the cheaters do. Then she smiled and she said, "What do you think? I'm a fool? I have these copies of it. ये photographs क्या है कुछ नहीं है nothing." She said, "I have copies of it, okay? Don't try to fool me." Then when she questioned him, subhanallah, all her friends, his friends, they have all come to their house, and in front of them she confronted him. And you know what he did? He ran to the mosque, it seems. He was so guilty, he felt bad. Or then she wanted to divorce him, but because of kids, she said, "No, I will continue." Maybe they are good now. I don't know what is happening in their relationship. But this thing I have come to know about a sister who confronted with proof and in front of everyone. So he could not attack her or do anything worst with her. May she flourish. तो यही है, मैं सिस्टर्स को एडवाइस करना चाह रही हूँ कि आप चीटिंग हस्बैंड को डायरेक्ट से कन्फ्रंट ना करें. कलेक्ट द प्रूफ, कलेक्ट द पीपल, 2 P's, plan, 3 P's, and preparation. Be prepared for the worst. Never ever confront when you're alone. They are very abusive, they are physically abusive, they can go to any extent. ये आज के लिए ये है.